Hello everyone. Am I audible clearly? Yes, ma'am. सॉरी गाइस, कल टेक्निकल इशू के वजह से मैं रीजॉइन नहीं कर पाई। आज मैं शेयर कर दूंगी पीडीएफ। डोंट वरी। Okay. So, yesterday we learned about statistics, two different types of statistics. Then, what is sample, what is population, what is observation, what are the different types of data, how a data looks like, and then how to identify the type of data, what are the different techniques we can use to visualize our data, and then we learned how to draw bar graph and scatter plot manually, and we understood the difference between bar graphs and histogram. Then we tried to explain a scatter plot as well. We tried to understand what is how to understand the relationship between two variables, whether they are having positive relationship or not, negative relationship or not, and if there is any non-linear situation. So we understood those things. Now, coming to the next part, that is central tendency. Now, here for central tendency, we have three methods. One is mean, one is mode, one is median. Okay. Now, for these three, we have three different techniques. Now, before starting, can you tell me, have you heard of these three terms? Do you know how to calculate mean? Do you know how to calculate mode and median? Yes or no? What chat? Okay. So yes, three yes, two no. Others, there are 20 students, but response तो मुझे दो तीन लोगों से ही मिलता है. अनामिका एंड सोहेल, एक आपको कोई एक के बारे में नहीं पता है या आपको लाइक तीनों के बारे में ही नहीं पता है? मैम तीनों के बारे में नहीं पता है। ओके, तीनों के बारे में मैम। ठीक है ठीक है। ओके, तो लेट्स से we have a data
This is my data. Okay. Now we'll find out mean, median, and mode for each. I mean for the data. Now, how to calculate mean? I got a lot of yes. So, उसमें से कोई एक बता सकते हो how to calculate mean? Sum of all value divided by number of values. Good. So, what we need to do? Sum of all data points, meaning 2 plus 4 plus 6 plus 6 plus 8 plus 10. Can you calculate and tell me what is the summation? 36. 36. So 36 is sum of all data points divided by number of data points, right? So how many data points we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Equal to, so this is my mean. Okay, next. Median. The median meaning we need to find out middle value, and mean meaning average. Okay, here we need to find out middle. Okay, so here what we will do, whatever data points we have, we'll arrange them in ascending manner. Ascending meaning small. So what is the smallest value? 2. 2. Okay. So 2, 4, 6, 6, 8, 10. So it's already arranged in an ascending manner. And descending meaning? Bolo? Descending matlab? Bigger one, then Last to small. small. Last to small. Yes. So 2, 4, 6, 6, 8, 10. These are my numbers and I have arranged them in ascending manner. Now what is the task? The task is to find out the middle value. तो आप बताओ इसका मिडिल वैल्यू कौन सा है? Six. And how you find that? Okay. In median, we have two formulas. Okay. One, if you have even number. Another one, if you have odd number. Okay. So how many data points we have? We have 6 data points. It means it is an even number. When you have even number, then we need to find out the average of two middle value. Okay. Now here we have 6 and 6. You might have something else. You might have 6 and 7. In that case, you need to find out the average of 6 and 7. Okay. If you have even number of data points. Okay. But if you have odd number, let's say 1, okay. So how many data points? 1, 2, 3, 4, 5. So in that case, if you have odd number of data points, in that case, we can easily find the middle value. We can easily find out the median. But if we have even number, then we find out the average of two middle numbers.
Clear? Yes, ma'am. तो अगर like everyone able to understand, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद तुम अच्छा जब मैम। बॉक्स सीखोगे तो यही टेक्निक हम बार बार यूज करेंगे। का कोई क्वेश्चन है? नो मैम मैम। इवन नंबर में बीच का जो दोनों है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने का ना। एवरेज। ओके। तो एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे ये 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 6 ही मिलेगा। तो 6 इज माई मीडियन। मीडियन में क्या रिपीट करूं प्रतीक? व्हाट यू वांट मी टू रिपीट? मीडियन में कौन सा चीज रिपीट करना है? बताओ। इन द मीन टाइम वी मूव टू मोड। इवन और ऑड नंबर नहीं रहे तो कैसे फाइंड करें? व्हाट? इवन और ऑड नहीं हुआ तो और क्या ही हो सकता है? आपके पास तो दो ही ऑप्शन है, इवन और ऑड। आपके पास कितना सारा डेटा पॉइंट्स है वो आप काउंट करके समझ सकते हो वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। जरा जरा यहाँ पे अगर तुम्हारे पास इतना सारा डेटा पॉइंट्स है तो तुम काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इज ए इवन नंबर। अगर तुम्हारे पास इवन डेटा पॉइंट्स है तो तुम मिडिल तो ढूंढ नहीं सकते, राइट? इफ यू हैव इवन नंबर्स, इफ आई गिव यू दीज 4 नंबर्स, तो आप इसका मिडिल कैसे फाइंड करोगे? इसका मिडिल तो ये हुआ ना, और यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल के वही मीडियन मान लेंगे। तो ये यहाँ पे 4 डेटा पॉइंट्स है तो इट्स ए इवन। बट अगर आपके पास ऐसा है 2 4 5 6 7, तो इसमें तो आप ये इसका मिडिल हुआ और ये ही तुम्हारा मीडियन हुआ, और ये तो ऑड नंबर है ना। 1 2 3 4 5, 5 डेटा पॉइंट्स मीनिंग ऑड। आया समझ में? ओके। तो कमिंग टू मोड। मोड मीनिंग क्या है? मोड मीनिंग मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट frequent value. Okay, meaning the data points you have, if there few data points, if you find few data points which are appearing multiple times. Okay, if I go back to this, sure, in this data point we have 6 2 times. So 6 is my mode here. So mode is nothing but the value that appear most frequently. Okay, if you have nothing, let's say if this is your data point, so here all the data points are appearing for one time only, right? So we can say all of them are our mode, or you can say we don't have any mode.
Clear? Simple. If this is your data point, then you can say all of them are mode, or you can say we don't have any mode value. And if you take this as your data point, so here you can see that 6 appearing for 2 times. It means so 6 is your mode. Clear? Yes, ma'am. Okay, see. We're moving to the next one. There are few more things we need to learn that comes under measure of spread. Okay, one is range, one is interquartile range, one is variance, one is standard deviation. Now these are very simple things. Let's learn one by one. First one is range. Now range is nothing but the difference between highest boundary and lowest boundary. Okay. See, if this is your data point, if this is your data point, the difference between your lowest boundary is 1 and highest or upper boundary is 10. So the difference between 1 and 10 is 9. So your range is 9. Now let me show you one thing. When talking about range, there is one data. Okay. So here in this case, we have 6 data points, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In this point also, we have 6 data points, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? Now, you tell me, out of these two data points, which one having higher range? Second. Second one. Others? Second one. Ma'am, can you repeat question again? So the question is, you have two sets of data, this one and this one. So which one having higher range? Second one. Second one, ma'am.
Okay. So everyone saying second one. Now let's plot this data. Okay. तुम्हारा आंसर एकदम सही है. तो मान लो कि 1. Okay, this is the scale. Now first we will plot the first one. 1, 2. So starting from here. 1, 2, 2.5, 3, 4, 7. So this much. And if we plot this one, we'll start from here. Then 10, then 15, then 17, then 20, then 20. So visually also we can understand that this one having small range and this one having a bigger range. Okay, now let's move to the next one. This one is interquartile range. Okay, the range between two quartiles. So here you can see one saying lower boundary, lower quartile, median, upper quartile, upper boundary, right? Now how to find this? Now let's create a data. You guys are doing this with your copy or somewhere? कर रहे हो क्या आप लोग? Yes or no? मेरे ना थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो मैं पूछ रहा था ये इसमें क्या करना है? हाँ? इसमें करना क्या है? मैं आपको जो मैं क्या कर रही हूँ ना वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, मेरे साथ करना है. ओके कंप्यूटर का कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ देख के नोट डाउन करना है. और फिर मैं कुछ
टास्क दूं तो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ओके। रेडी एवरीवन? ओके। Yes. ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। Done, ma'am. Okay, let's take a data set first. इसको सॉर्ट करके बताओ। स्टेप 1 सॉर्ट, डेटा सॉर्टिंग करके बताओ क्या होगा। हेलो मैम। हम्म। मैम इसमें जो नंबर सॉर्टिंग करना है वो जो सॉर्टिंग है जैसे ए बी सी के जैसे होता है वैसे ही सॉर्टिंग करना है ना? हाँ, असेंडिंग वे में, स्मॉल टू लार्ज। असेंडिंग में। हाँ, हो गया मैम। बताओ। तो 2 4 7 9 10 15 18 21 25। धीरे बताओ। 479 फिर 10 15 18। 21, 25. now what is the next step for interquartile range? The formula is to find out the difference between quartile 3 and quartile 1. This is the formula. The difference between Q3 and Q1. Okay. So interquartile range equal to Q3 minus Q1. So what we need to do? We need to find out the value of Q3 and value of Q1. ठीक है? अभी sorting तो हो गया. What is the next step? The next step is find out the median of this sorted data. Point number 2 is find out the median.
बताओ what is the median? 10. 10 हुआ है. Is it same for everyone? Yes, ma'am. Yes, So yes, ma'am. let's take 10 as our median. This is our median. Now you have a part left side, part right side. Okay, you have 4 data in each side. Now, what you need to do, you need to find out the median of left side and the median of right side. तो आप पहले बताओ इसका मीडियन क्या है लेफ्ट में 2479 का 5.5. बाकी बताओ जल्दी राइट का 19.5 लेफ्ट का लेफ्ट का 5.5 Good. So this one we have here 5.5 and here we have 19.5. Okay. So this one is our Q1 and this one is our Q3. Okay. And this one is our Q2. Okay. So for interquartile range, we need the difference between Q3 and Q1. So Q3 is 19.5 minus 5.5. So 14. now you, 14 sorry? ma'am, 14. So this is our 14 is our interquartile range. Okay, easy. Yes, ma'am. yes Now I will give you one data set. You need to do the entire thing. Okay, I'm keeping it in front of you so that you can complete the task. Chalo, let's start. Question number 2. मैम वो 4 के बाद 4.5 है या 5 है? ये 14 है एंड ये 5 है. IQR फाइंड करना है ना मैम? हाँ, सेम सेम.
मैम 13। मैम 11। 13 ओके, एक मैम काम 11। करो, चैट में लिख दो, ये कैसे दादा, लेट मी कैलकुलेट एक्चुअली। आप चैट में मेंशन कर दो इसका क्या आंसर है। मैम आंसर क्या है टोटल? Hmm, 10 very आएगा मैम। lot of different answers. Okay, I can see only right answer from Prajwal, Rutuja, Parveen. The answer will be 11, and these three people gave me right answer. But मैम कैसे आएगा 11 मैम? आप एक्सप्लेन प्लीज। कैलकुलेट करो ठीक से। Right, good Gauri. 11 will be the answer.
ये सेम टेक्निक यूज करो, करके देखो क्या आता है। Okay. Just give me 1 minute, okay? मैम Q1 एंड Q3 क्या आएगा? सेवन एटीन। मैम एक बार आप सॉल्व करो ना। इसके पहले वाले में अपना 9 नंबर थे बट इसमें 10 है, तो इसका मीडियम 12 होगा। एंड 12 के जो पीछे जाएंगे तो 7 होगा आई थिंक सो। एंड फिर 12 के दो आगे जाएंगे तो 18 होगा। तो 18 के आगे 19 और 8 माइनस 11। Yeah, right, Tushar. Okay, chalo. Moving to the next. Moving to variance. Variance का फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत याद रखना है. So this is the formula. I will show you how to do it. And another one thing is standard deviation. Now, the difference between variance and standard deviation is one we get with the square, one without square. Okay. So, let's first calculate standard deviation. Let me check if I get a data, real data.
This is the data, and to find out the variance, formula is summation data point in the mean value whole square n minus 1, right? So this is the data, and we need to find out the mean of it. कैलकुलेट करके थोड़ा बताओ क्या है इसका मीन. ऑडिबल. Yes, ma'am. इसका ठीक से करो. 6. इसका मीन बताओ. 5. सिंपल एवरेज. 3 लोगों का 3 अलग आंसर. 6, राइट? 6. 10 मैडम. वेरिएंस कितना? 10. सॉरी. वेरिएंस 10. वेरिएंस हेलो. I He's asked for saying the variance is equal to 10. I'm just asking for the mean. हाँ ओके 6. Okay. Now the next step is the deviation from the mean of each data set. मतलब ये जो डेटा पॉइंट है एंड ये जो मीन है, इसके बीच में डिफरेंस और डेविएशन कितना है. ओके. So what you need to do, this is your data point and this is your mean. So here what we will do, we'll do 2 minus 6. 2 minus 6 मतलब? -4. Yes. Next. -2. Next. 0. Next. 2. Next. 4. 4. Okay. Now what we need to do? We just need to we need to square off this number. We need to find the square of this deviation number. बताओ. 16 4 4. 0. 4. 0 16. 4 16. 16. Okay. Now we need to do the summation of this. क्योंकि यहाँ पे summation है ना. 40. 4 0 40. So we find the upper part. This part is done, right? Now next is n minus 1. How many data points we have? 5 data points, right? The 5 answer data is 10. 4. तो क्या करना है अभी?
We are 40 calculating divided by 4. 40 divided by 5. 5. And what would be the answer? N minus 1 ना मैम, 8. तो 5 minus 1 मैम. So this is your variance. मैम n minus 1 तो यहाँ n की वैल्यू 5 है तो 5 minus 1 होगा ना मैम. Variance. Okay. Here, let me tell you one thing. You can calculate, there are two different formula. One is the whole thing, the upper thing will be same, and below there will be only n. Okay. So if you have n, then 5 is the answer. If you have n minus 1, n minus 1 we use when we are dealing with sample data. If you are dealing with population, then we do n. Okay. So if it is for sample, then it is n minus 1. And then we have, yes, you are right, 5 minus 1 is 4. Then the answer will be 10. And if it is for population, then it will be only n. Now, with the same calculation, we can find out the standard deviation as well. What is the formula for standard deviation? Square root of variance. Same thing, only we have added square root with it. So with the same thing, we can find out square root of 10. Right? करके बताओ. Three point 3 point? 1 6. Good. 16. Okay. After point, we don't call 16, 18, 100. We call 1 6. It is not 16, it is 1 6. Okay. Guys, these are very important. You need to remember the data points as well. I'm giving you a very small data set. अभी मुझे इसका standard deviation चाहिए. लो.
42.5. का अलग अलग कैसे आता है, आई डोंट नो। Alpesh, good. 4.24 is the answer. तो मैं एक बार बोल देती हूँ, आप एक बार चेक कर लो। मीन 9 आया है क्या सबका? हाँ Yes, ma'am. yes ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप में जाओ। 3 minus 9 minus 6. 6 minus 9 minus 3, right? 9 0 minus 3 9, 0. 12 3 minus 9, 3. 15 minus 9, 6. हुआ? Yes ma'am. Right. अभी स्क्वायर करना है बस। तो अभी -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36। समेशन करो तो 90 आएगा, राइट? Right. अभी 90 डिवाइडेड बाय मैम 90 डिवाइडेड बाई अगर 9 n किए हो या n से? n N n से minus मैम one. अगर माइनस अगर 1 n से करें मैम मैम ओके, अगर अगर n से n से करते हैं कर तो 4.2 मैम अगर n से करते हैं तो 4.24 आएगा हाँ, एंड अगर n माइनस 1 से करते हैं तो 4.74 आएगा। ओके। सेम आया सबका? सौरभ का सेम आंसर है, गौरी का डिफरेंट आंसर है। गौरी आप चेक करो अच्छे से। एंड कल्पेश, गुड। सोहेल, आप एक बार पॉइंट चेक कर लो, मे बी आपका टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, आई डोंट नो। 90 डिवाइडेड बाय 8 करना है ना मैम? 90 डिवाइडेड बाय 8 क्यू, कितना सारा है डेटा पॉइंट्स तुम्हारा? 5 है। 9 तो माइनस 1 1 किया मैम। करोगे तो 4 होगा ना? ओके ओके। 90 तो तुम्हारा टोटल समेशन है, ये ऊपर का पार्ट। नीचे क्या है? n-1। तो n कितना है तुम्हारा? 5। 5 minus 1, 4। So यस 90 मैम। divided by 4 and then मैंने what x is the माइनस answer? 1 किया, 9 माइनस 8। एंड जो भी आंसर आएगा उसका रूट ओवर कर दो बस। Okay, let's move to the next part.
ये समझ में आ गया ना सबको? यस मैम। Okay. So we'll start with the probability. So before starting, can you tell me what is probability? What is probability? Possibilities. Possibility. Okay. So let's say there is an event where we need to flip a coin. Now, before flipping, we don't know what we will get, whether it will be head or tail. So there is a possibility of getting head and a possibility of getting tail. So if I ask you, what is the probability of getting head? You will tell me, Jishmita, I don't know. It can be 50-50. The chance of getting head is 50-50. Now, how you get this 50? You get this 50 because there are probable two outputs. One is head, one is tail. So you have probable two outputs. Now total is 100. That's why you are telling me 50-50, right? If we have three probable outputs, then you might say that the chance is 30.33. Sorry, 33.33, right? Now, so how we get probability? We find out the probable outcomes of an event, right? And the total event is always 1. Okay. Now, if I ask you what is the probability of getting 4 while rolling a dice. Okay. So in that case, there are 6 probable outcomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there is a chance of getting 4 is 1 by 6, right? Because the total is always 1. जो आउटपुट तुम्हें मिलेगा आफ्टर रोलिंग अ डाइस, that is always one event, right? Because you are rolling the dice for one time. So the total event is always 1. And how many probable outcomes you have, that we mentioned, that like if I ask you that what is the probability of getting head, you are telling me the chance is half, right? So 1 by 2. So the total event is 1 and we have 2 probable outcome. That's why it's 1 by 2. Now, when coming to rolling a dice, we have 6 probable outcomes, so it is 1 by 6, right? So this is how we calculate, this is how we understand. Now, can you tell me the definition of probability over chat? जो भी समझ में आया वो ही लिखो. What is probability? जो भी समझ में आया, write that.
Good, Saurabh. Yeah. Good. Guys, I have a request to all of you. Like, आप लोगों के लिए ही है कि आप थोड़ा बहुत ना थोड़ा इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में आंसर करना प्रैक्टिस करो। लाइक जब मान लो कि सेशन के बाद व्हेन यू आर रीडिंग सम आर्टिकल्स, जब तुम मैं बोलती हूँ ना कि थोड़ा बहुत आर्टिकल्स पढ़ो, तो इससे क्या होगा ना, तुम्हें वर्ड नॉलेज, तुम्हारा जो वर्ड नॉलेज है डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का, वो बढ़ेगा। बिकॉज सी आप सीख तो जाओगे यहाँ से, राइट? यहाँ से कैसे भी करके आप सीख जाओ, सारे टॉपिक सीख जाओगे, बट उसके बाद क्या आएगा? व्हाट आफ्टर दैट? आपको इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ेगा, राइट? वहां पे आपको इंग्लिश में आंसर करना पड़ेगा, राइट? वहां पे आपको अगर कुछ लिखना है, या तो फिर मान लो देयर आर सो मेनी कंपनीज जो आपको ऐसे ऑनलाइन साइट्स होता है जहाँ पे आपको एक्सेस दे देगा, या तो कुछ लिंक भेज देगा, एंड वहां पे आपको प्रॉपर लाइक एग्जाम की तरह क्वेश्चंस रहेगा, एंड वहां पे आपको आंसर्स लिख के फिर नेक्स्ट स्टेज में जाना पड़ेगा। ओके, तो वो ये मोस्ट ऑफ द कंपनी ऐसा ही करेगा, क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग इंटरव्यूज। तो वो लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट 1-2 स्टेप में आपको ऐसे क्वेश्चंस देके, जो लाइक जिसको नहीं आता है उन लोगों को ऐसे ऐसे ही लाइक फिल्टर आउट कर देगा। तो फॉर दैट देयर आर सो मेनी कंपनीज जो ऐसे वर्बल या 1-on-1 इंटरव्यू लेने से पहले आप लोगों को ऐसा लिंक्स भेजेंगे। तो वो लिंक में जाके आपको ऐसे आंसर्स लिख के, कोई कोई ओपन एंडेड क्वेश्चंस होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होगा, या तो फिर कोड रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो भी है वैसे आपको सॉल्व करके फिर मे बी वो अगर आप क्रैक कर पाओ तो नेक्स्ट राउंड में you can go and there will be a person who will take your interview.
तो ये सीखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है विच इज इंटरव्यू, उसके लिए भी तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, बट इन जनरल मैं बोलूंगी, लाइक एज अ सजेशन मैं बोलूंगी कि आप ट्राई करो कि थोड़ा बहुत आर्टिकल्स पढ़ लिए, थोड़ा बहुत ये जो यहाँ पे ये डेटा साइंस में तुम जो नए नए टर्म्स सीख रहे हो ना, वो थोड़ा बहुत आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये जो प्रोबेबिलिटी आपने सीख लिया, फिर मान लो ये हाइपोथेसिस, ये जो मीन, मीडियन, मोड, ये जो टर्म्स आप सीख रहे हो ना, इसके बाद भी लाइक इन एल्गोरिदम्स आल्सो यू विल लर्न डिफरेंट टर्म्स, लीनियर अलजेब्रा, ये वो कितना कुछ रहेगा, तो वो टर्म्स आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अब थोड़ा लाइक ये सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे का सेशन इज नॉट एनफ, इसके बाद भी खुद के लिए बहुत सारा काम रहता है, so don't neglect that। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे सब तो पता है बट आई एम अनेबल टू राइट इट, आई एम अनेबल टू स्पीक इट अप, मुझे आंसर पता है बट मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहा है, मैं कॉन्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं होना चाहिए। आप देखो, इफ यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू, आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के टाइम आप हिंदी यूज कर सकते हो, बट वेन यू आर आंसरिंग, तब आपको हिंदी में उस वर्ड का कुछ मिलेगा भी नहीं, एंड इफ यू आर गिविंग इट इन हिंदी, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ओके, बिकॉज लेट्स से इफ आई एम हायरिंग यू, आई एम हायरिंग यू एज अ डेटा एनालिस्ट और एज अ डेटा साइंटिस्ट, इन दैट केस आई एक्सपेक्ट कि मेरा क्लाइंट के साथ आप इंग्लिश में ही बात करोगे, नॉट इन हिंदी। आई हैव फॉरेन क्लाइंट्स लेट्स से, तो यू, अगर आप चाहो भी तो फिर भी आप हिंदी में नहीं बात कर सकते उन लोगों से, राइट? तो मैं तो क्लाइंट के लिए ही आपको हायर कर रही हूँ, राइट? तो मैं तो क्लाइंट के बारे में पहले सोचूंगी, तो यू थिंक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मुझे समझ में नहीं आ रहा है या आई कांट स्पीक, वो करोगे तो सिर्फ ये सीखना विल नॉट बी एनफ, मैं थोड़ा बहुत उसमें भी फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा लिखने में, थोड़ा लिखो, जो आर्टिकल्स तुम पढ़ रहे हो ना वो थोड़ा समझ के फिर खुद के लैंग्वेज में लिखो, ताकि तुम पढ़ के इंटरव्यू में बैठ सको। एंड व्हेन यू आर रीडिंग वन थिंग विच योर ओन लाइन्स ओनली, तुमने खुद ही लिखे हैं वो लाइन, जब वो तुम बार बार पढ़ोगे ना, देन यू विल, और अभी तो चैट जीपीटी भी है, तुम्हारे खुद के जो समझ में आ रहा है वो लिखो, टाइप करो, टाइप करके देखो, इसमें कुछ अगर गलती है तो चैट जीपीटी ही तुम्हें बोल देगा कि ये यहाँ पे ये ग्रामर रॉन्ग है, मैं ये यूज करना है। तो तुम्हारे पास इतना सारा टूल्स है, चैट जीपीटी इज एनफ टू हेल्प यू, राइट? अगर कंस्ट्रक्शन में कुछ हेल्प चाहिए तो उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, सीख तो तुम जाओगे, यू विल लर्न एनफ, तुम अच्छे से सीख जाओगे, यू विल लर्न फ्यू आर्टिकल्स, तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाएगा, कोडिंग भी तुम सीख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो सीख जाओगे, बट यू नीड टू फिगर आउट दिस पार्ट एज वेल। देयर आर फ्यू पीपल हु कैन स्पीक गुड, तुम सब कर सकते हो, आई बिलीव, ओके, आई बिलीव ऑल ऑफ यू कैन स्पीक वेल, बट तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो इफ यू फील कि मुझे डर लगता है बात करने में, तो थोड़ा बहुत ट्राई करो खुद के साथ, या यहाँ पे भी गलत भी बोल दोगे तो क्या ही होगा, आई वोंट माइंड, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। ठीक है, तो आप, अगर तुम्हें डर लगता है तो सेशन में भी तुम रिप्लाई करो, इंग्लिश में करो, अगर गलती हो रहा है तो मैं तुम्हें करेक्ट कर दूंगी। ठीक है, बट वो वाला एस्पेक्ट भी थोड़ा ध्यान में रखो कि मुझे इंग्लिश में थोड़ा लिखना है, एंड स्पेलिंग भी ठीक रखना है, राइट वर्ड यूज करना है, एंड थोड़ा बोलना भी है। ठीक है, तो इट्स अ सजेशन, अगर आप गलत भी कुछ बोल दोगे तो नो वन विल लव, सारे तुम्हारा फ्रेंड्स ही है तो कुछ भी नहीं होगा, मैं भी तुम्हारा फ्रेंड ही हूँ, तो आई आई विल नॉट माइंड, मैं करेक्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ट्राई टू डू दैट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट इज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. So normal probability तुम्हें समझ में आ गए, right? Now coming to empirical probability. Now what is this empirical probability? Empirical probability मतलब यहाँ पे there is no chance of possibility. यहाँ पे हमें chance नहीं लेना है. We'll do it and we'll check how many times I'm getting head. We'll do and check how many times I'm getting tail. We'll roll the dice and check how many times I'm getting 4. Okay, so this is called empirical probability. Let's say if I ask you that what is the chance of getting head if you roll the dice for 100 times. Okay, so what you will do? You will literally roll the dice. Oh, sorry, you will literally flip the coin and will check how many times you are getting head. आप 100 times ये flip करोगे and check करोगे कि कितना time मुझे head मिला. Let's say you got head for 40 times. So 100 में से 40 times meaning 40%. So the empirical probability of getting head if we flip the coin for 100 times is 40%. Clear? Any question? No, man. No way. Okay, ये तो बहुत easy है. Now moving to the next part. When we are talking about probability, there are 3 axioms. Okay, जो we need to remember while dealing with probability problems. Okay, one is what I have mentioned, that the total number of event is always 1. Okay, the relative frequency of event that is certain to occur must be 1. That's why when we have 2 probable outcomes, we do 1 by 2. When we have 6 probable outcomes, we do 1 by 6. When we have 3 probable outcomes, we do 1 by 3. Okay, let's say in a bowl you have 5 marbles. Okay, 5 marbles of 5 different colors. Now if I ask you what is the probability of getting red color marble, can you tell me? I'm repeating the question. You have 5 different marbles, okay, in a bowl of 5 different colors. Okay, now I'm asking you what is the probability of picking up one red color marble from that bowl? 1 by 5. 1 by 5, yes. Because you have 5 probable outcomes, choosing one of them, so it will be 1 by 5. Not even for red, for all the other colors. Let's see if I ask you what is the probability of picking up yellow, what is the probability of picking up black. For all of them, it will be 1 by 5. Okay. Now this you need to remember. The probability of getting any one of the number between 1 to 6 while rolling a dice will be, 1 by 6. yes. This is one axiom. Moving to the second one. Next one, axiom 2. What is that? The relative frequency of occurrence of any event must not be negative. Meaning, this 1 by 6, 1 by 3, all are fine. But if I ask you, when rolling a dice, what is the probability of getting head? While rolling a dice, what is the probability of getting head? डाइस में हेड नहीं होगा. गाइस में हाँ मैम हेड नहीं मिलेगा. Head nahi milega, right? So it is impossible. So if you have any impossible event, in that case, it is always 0. It cannot be negative. The probability cannot be negative. It is always
If you have any impossible event, in that case it will be 0. So our probability always varies between 0 to 1. So the rule number 1 and 2 together telling us that probabilities lies between 0 for impossible event and 1 for certain events. Okay, it always varies between 0 to 1. It cannot be less than 0, meaning it cannot be negative. So this one you need to remember. This is one formula. This is probability of A union B. Probability of A plus probability of B if probability A intersection B is not equal. Okay, let me show you. If two events cannot occur simultaneously, meaning if you are flipping a coin, you cannot get head and tail together, right? So two events cannot occur simultaneously because they are mutually exclusive, meaning you either get head or get tail. You can't get both together, right? The probability of an event defined by their union is equal to the sum of the probabilities of two different events. Probability of A union B, probability of an event defined by their union is equal to sum of the probabilities, probability of A and probability of B का sum. Okay, this property is known as additivity. So this is a formula which you can remember. Now what is union? Let's say you have one event A, you have one event B. Okay, now if I draw them like this, this is the common part between two events. This is called intersection. And the whole event together is called union. And this is called intersection. Okay. So this is nothing but a formula you need to remember. So can you write down 3 axioms? 1, 2, 3. Can you explain formula once again? फॉर्मूला समझना नहीं है, आप सिर्फ याद कर लो. ये एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा एंड यू डोंट नीड दैट. फॉर्मूला कहाँ से आया वो समझना नहीं है. इंटरव्यूअर इससे पूछ सकता है कि इस फॉर्मूला नहीं.
Guys, first, what are the three different axioms? Good. Okay. Next is conditional probability, but we'll explain you the whole thing. Okay, here the formula is very important. Guys, I'm wrapping up little early today. Okay, we'll compensate this in the next session. Okay, is it fine, guys? Ma'am, please share the PPT file. Yesterday I forgot to. Mm-hmm. देखो कर दिया। मिल गया ना? यस मैम, मिल गया। Okay, चलो बाय।